Namaskar, welcome to Apollo 24/7's Health Hour. Health Hour is a show where we bring experts from Apollo hospitals every Sunday to the live session. और आप पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेरीज, क्वेश्चन, सवाल जो भी है आप YouTube पर टाइप कीजिए चैट बॉक्स पर और हम ये हमारे एक्सपर्ट के सामने डाल देंगे and you will get answers for all those unanswered queries. You must be watching this on YouTube and Facebook and also Instagram Live. But we request if you have a query or you want to participate in the health quiz, which is going to come up on the show towards the end of the show, please hop on to the YouTube chat where you can type and I'll be interacting with you all. Also on this show, we have a health quiz, as I've mentioned before. We're going to give you coupons and we're going to give you some gift vouchers as well. So hold till the end of the show. And on this show today, we are going to talk about backache. कमर दर्द कैसे दूर करें, ये हम आज बात करने वाले हैं. प्रोडोमिनेंटली हिंदी एपिसोड होगा. अगर आपको इंग्लिश में कुछ आंसर की जरूरत है तो प्लीज टेक्स्ट एंड टाइप दैट यू वांट एन आंसर इन इंग्लिश एंड वी शैल मैनेज विद दैट. And today's expert is Dr. Professor Raju Vaishya, who is a senior orthopedic and joint replacement surgeon from Indraprastha Apollo Hospitals, New Delhi. सर का 37 years से एक्सपीरियंस ये फील्ड में है and he specializes in the treatment of joint pains, arthritis, fractures, osteoporosis and back pain treatment as well. And Indian Professional Orthopaedic Association, Royal College of Surgeons of England, American College of Surgeons SICOT के प्रोफेशनल मेंबरशिप्स है इनके. और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स तो काफ़ी सारे हैं. डॉक्टर BC रॉय अवार्ड है and he's been presented with Best Researcher, Best Paper Publications and Siemens GAPIO Awards के साथ भी उनको अवार्ड किया गया है. Let me welcome, it's our honor welcoming Dr. Professor Raju Vaishya. Namaskar, sir. Good morning, sir. Welcome to the show. Thank you. So every Sunday we bring an expert and today is our honor and privilege to have you here on this show. And as we've mentioned earlier, our audience are going to ask questions and we are going to place the questions before you. So while we are talking about back spinal health, I would want all our audience to stretch their backs, stand up tall and then type their questions. So it's as we talk about backache, how common is this and what are the reasons for backache? बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30. पहले तो ये यूजुअली 50-60 इयर्स के बाद लोगों को महसूस होता था, बट विद द टाइप ऑफ जॉब्स दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन सिटिंग जॉब्स इन चेयर्स, ये 25-30 साल की एज से ही आजकल हमको देखने को मिलता है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा बैक का इन्वॉल्व होता है वो लोअर बैक और गर्दन का है, क्योंकि वो दोनों आगे झुकाकर हम लोग दिन भर काम करते हैं. जी जी. तो ये लगभग एज के हिसाब से अर्लियर हम सोचते थे कि बड़े होते ही एज प्रोग्रेस होते ही ये बैक वाला स्पाइनल हेल्थ वाला इश्यू होता था. सो नाउ यू आर सेइंग दैट वी हैव प्रोग्रेस्ड टू अ लोअर एज. Is it only because of our postural related issues, sir, या कोई और भी reasons है? Mostly it is an occupational hazard. हमारे काम करने की तरीके ठीक नहीं है. हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई है वो खड़े होने के, काम करने के, पेड़ों पर चढ़ने के हिसाब से बनाई है, पर अब हम उसको दिन भर राइट एंगल पोजीशन में बैठकर काम करते हैं. उससे बैक पर गर्दन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है और जो उसके शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो उस पर स्ट्रेस बहुत आता है. वो जल्दी सूख जाती हैं या स्लिप हो जाती है. उसके कारण से ये बैक पेन की प्रॉब्लम क्रॉनिक होती जाती है और ये बहुत कॉमन हो गया है. जी जी. Sir, before I ask my next question, a lot of audience have already joined in. Sanjay, Shravan Raj, Mahantesh, School Vibes. Can I request you all to please type your age और बाकी सब अगर कुछ प्रॉब्लम है आपका, अगर आपने कोई इलाज लिया हुआ है या कुछ मेडिकेशन पे ऑलरेडी है,
Please include all those details in one message so that I can read them clearly out to Dr. Professor Raju. So here's there are a lot of things that we've been talking, doctors, that कि back का health either cervical होता है या lower back का भी होता है. तो mid back का क्या role होता है and how can we experience the pains in various regions? मिड बैक पेन इज रिलेटिवली रेयर, क्योंकि जो हमारी मिड स्पाइन है वो रिब्स से सपोर्टेड रहती है, रिब्स उसको सपोर्ट करती है, वेयर एज नेक और लोअर बैक फ्री होती है, उसको कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं रहता, इसके कारण से उन पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। और ये दोनों हिस्से ज्यादा मोबाइल भी होते हैं, गर्दन और लोअर बैक, कंपेयर टू मिडिल बैक विच इज स्प्लिंटेड विद रिब्स। तो इसलिए उसमें कम होता है, परंतु अगर किसी को मिड बैक पेन है तो वी कंसिडर इट टू बी मोर सीरियस, एंड serious things that can happen in such condition is somebody may have cancer, somebody may have infection like TB, sometime it could be due to osteoporotic fractures. So mid back pain is relatively rare but more serious than lower back pain and neck pain, which is more common. So, आप पहले बात करते हुए ये इस पे हाईलाइट किया था कि हमारे लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो भी है, दीज आर ऑल्सो लीडिंग टू एन अर्ली ऑनसेट ऑफ बैकएक। तो हमारे लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो हमारे स्पाइन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है? सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह का कोई जॉब करते हैं जिसके अंदर प्रोलॉन्ग सिटिंग इन्वॉल्व है, तो आपको अपनी बैक की मसल्स को, नेक की मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो कीप एक्सरसाइजिंग, स्पेशली एक्सटेंशन एक्सरसाइज, उल्टा लेट कर गर्दन ऊपर उठाना और दोनों पैरों को उठाना। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अवॉइड sitting in one posture for more than 45 minutes. After every 45 minutes, you must take a mini break for 2 to 5 minutes where you can stretch. हाँ, और अपना दूसरी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो पोस्चर रिलेटेड ही है, वो है यूज ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप यूज करने के लिए हमको उसको आइडियली लैप में ही रखना चाहिए, इसीलिए उसका नाम लैपटॉप शायद पड़ा है। तो उसमें गर्दन को, कमर को ज्यादा झुकाना पड़ता है। इफ यू आर यूजिंग अ डेस्कटॉप, यू आर रिलेटिवली सिटिंग स्ट्रेट, राइट? तो अपना इस तरह से पोजीशन करिए डेस्कटॉप को भी कि आपको कम से कम झुकना पड़े, एंड योर बैक मस्ट बी स्प्लिंटेड अगेंस्ट योर चेयर ऑल द टाइम्स। अगर वो नहीं हो पाती और बीच में गैप होता है तो स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है। कुछ लोग ये अगर नहीं कर पाते, देन देयर इज अनदर solution to it. Use a back support, pre-molded back supports that are available in the pharmacy. तो वो आप अगर लगाएंगे तो वो आपके बीच में एक तरह से कुशन का काम करते हैं, and that can be used both in the chair as well as in the car, because nowadays we are spending, many people are spending 2 to 4 hours every day traveling to their work and coming back home in the car. So that is also a good idea. राइट सर, जैसे आपने बोला है कि स्ट्रेंथन करो, हियर्स मिस्टर जय कुमार बालसुब्रमण्यन हु इज आस्किंग हाउ डू वी स्ट्रेंथन? It is very simple. You lie on your face down, lift your neck up, hold it for a few seconds, and bring it down. So that will strengthen your neck. To strengthen your lower back, again lie prone, that is face down, and lift your leg without bending the knee, one by one. And once you have mastered it, you can do with both legs. So that will keep your back extensor muscle strong, and that will take care of your forward bending posture. Another thing which puts a lot of stress on the disc is weightlifting and forward bending. A lot of people go to gym, a lot of people do heavy manual work, and they have to do these exercises every day, and that puts a lot of stress. So if somebody has back pain, they should avoid these
एक्टिविटीज, आगे झुकना, वजन उठाना। और अगर आपको करना पड़ता है तो सिंपल थिंग इज टू स्लाइटली बेंड देयर नी, घुटने को थोड़ा सा मोड़कर आप झुकेंगे तो बैक पर कम स्ट्रेस आएगा। इसलिए जिनको कमर में दर्द है और झुकने का काम करना पड़ता है, जैसे लेडीज का घर में अभी भी झाड़ू लगाना, जमीन पर बैठना, इस कपड़े धोना, ये बड़ा कॉमन है। इसके कारण से आगे झुकना ही पड़ता है। तो वो अगर अवॉइड हो सकता है आपको बैक पेन रहते हुए तो करिए, अगर नहीं हो सकता तो सावधानी रखिए। Wonderful advice, sir. Thank you. So let me start with the questions on the YouTube जो मुझे दिख रहे हैं। एस्टेक सोल्यूशन इनका नाम दिया नहीं है, बट एज है 32 इयर्स और मेरे बाएं कंधे में पिछले 6 महीने से शुरू होगा पेन शुरू हुआ है। अब बढ़ते बढ़ते अब दो गले तक आ गया, वो गले तक आ गया है। ओके, सो कंधा से लेकर गले तक आ गया। 32 साल है इनका एज। देखिए, दो चीजें बड़ी कॉमन हैं इस एरिया में जिसके कारण से कंधे और गर्दन में दर्द होता है। वन इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में डिस्क डीजनरेट हो जाती हैं। और दूसरी चीज है फ्रोजन शोल्डर। तो ये स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है कि किस कारण से आपको ये कंधे का दर्द हो रहा है। दोनों में से किसी भी कारण से हो सकता है। कुछ लोगों को दोनों चीजें भी होती हैं। तो सर एज अगर काफी यंग है ना सर इनकी। फ्रोजन शोल्डर तो हम पहले सुनते थे कि बड़े सीनियर्स में मिलता है। फ्रोजन शोल्डर यंग लोगों में भी होता है, स्पेशली दोज हु आर डायबिटिक्स, दोज हु आर डायबिटिक। एंड फ्रोजन शोल्डर से something related to another condition called impingement syndrome, where कि कंधे की थोड़ी सी हड्डी बढ़ जाती है और उसके कारण से जो रोटेटर कफ टेंडन्स होते हैं उस पर वो इम्पिंज करती है, इसीलिए इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। और उसमें ये हाथ उठाने में दर्द होता है इस तरह से। जी तो वो पेशेंट खुद तो डायग्नोज नहीं कर सकते। तो अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है या बार बार हो रही है, उनकी नाइट स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट हो रही है, तो वन शुड नॉट इग्नोर, बेटर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि जितनी जल्दी आपकी बीमारी का पता चलेगा, डायग्नोसिस होगा, उतना अच्छा इलाज हो सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। Wonderful, sir. So next question is from Shravan Raj. Shravan Raj is 27-year-old and he has upper back pain. How to get rid of middle back pain? A little towards the upper back. I have arthritis and unconfirmed psoriatic arthritis as well. And he also is on some medications that he has given us. Mabura 40 injection after stopping SARS for 6 months, tofasinative tablets for 6 months for a very long time. So, any advice for him? सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी उन लोगों को होती है जिनको कि स्किन में सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसमें जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। एंड टिपिकली जिन लोगों को जोड़ों में सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है उनको जॉइंट पेन्स होते हैं, बॉडी में स्टिफनेस होती है, स्पेशली व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग। इट may take them 15 minutes to almost couple of hours to get over the initial stiffness, क्योंकि रात भर लेटने के बाद बॉडी के जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और उनको जब एक्टिवेट करते हैं तब वो जाकर थोड़ा उनको रिलीफ मिलता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि आपके जोड़ों में आर्थराइटिस हो सकती है एंड योर डिसीज में स्टिल बी एक्टिव। तो वो आपको टेस्ट से पता लग जाता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक ESR, CRP एटसेट्रा, कि डिसीज कितनी एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, जैसे कि आप कुछ दवाएं वो ले ही रहे हैं उससे रिलेटेड। और जिनको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है उनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स या इंजेक्शंस प्लस मसल रिलैक्सेंट्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। प्लस योगा, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, ये सब भी बहुत ज़रूरी है दवा के साथ साथ। Yeah, so do not fear about the long-term medical usage.
दिस हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। तो काफी बार ये होता है कि लोग डर जाते हैं लॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, या मेडिकल एडवाइस अगर दिया जाता है तो दे ऑल्सो फियर दैट क्या उनके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या। जी। अ, देखिए, दो तरह की बीमारियां होती हैं बेसिकली। एक तो होती है क्रॉनिक इलनेस, जिनके अंदर आपको दवा लंबे समय तक या इलाज लंबे समय तक कराना ज़रूरी है। If you do not do it, it will cripple, it may cripple you। जैसे कि कई बीमारियां होती हैं हम लोगों को, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर उसका ढंग से इलाज नहीं किया और ये आपको समझने में कोई परेशानी है कि आप मैं लंबा इलाज नहीं करा सकता, मैं आई एम फेड अप, वो फेड अप होने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, वो आपको सारे जोड़ों को खत्म करेगी। दूसरी बीमारी होती है जो कि शॉर्ट टर्म होती है कि आपको डिस्क थोड़ा सा स्लिप हुआ या मसल स्ट्रेन हुआ लोअर बैक में, 2-5 दिन में ठीक हो गया, फिर साल 2 साल बाद हुआ, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए भी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। पर जो क्रॉनिक इलनेस है उनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ इफेक्टिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना बहुत ही जरूरी है सर, डॉक्टर राजू ने बताया है। राइट, नेक्स्ट रुचि अरोरा जी है, 32 ईयर ओल्ड है, एंड शी हैज टू मच ऑफ पेन इन द बैक एंड हैज अ सिटिंग जॉब, व्हाट कुड आई डू। जैसे मैंने पहले भी बताया, जिनका सिटिंग जॉब है उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने पोस्चर का स्टूपिंग पोस्चर नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग सिटिंग इन one position should be avoided, which is easy to do after every 45 minutes. If you just take couple of minutes, uh, go around your office or talk to other people, stretch your back, that is good enough to break the monotony, and वो करना है। प्लस वेट रिडक्शन इज ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल। जितना बड़ा पेट होता है उतना ज़्यादा स्ट्रेस लोअर बैक को पड़ता है, एंड हेंस यू मस्ट कॉन्शियसली रिड्यूस वेट इफ यू हैव टू डू sitting job for long duration. And use of back support is also very, very helpful and very easy to do, and it's not expensive. One must use that. I do not advocate having specific orthopedic chair, inverted commas. There are no orthopedic chair that have been advised. These are all commercial. You can use any chair which is comfortable for your use, but you must splint your back or rest your back against the back of the chair or at all the times। and if you are unable to do, तो एक बीच में आप बैक सपोर्ट लगा लीजिए, कुशन लगा लीजिए, तो वो करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। Wonderful, sir. So, people who drive, now we've talked about desk jobs who are sitting, people who are into occupation of driving and long drives pe jaate hain. For example, my own brother who has to drive almost 80-90 kilometers every day up and down for his work, he faces a lot of problem due to driving. And what is an advice for people who are driving for a long time? Driving again, is similar to sitting on chair. If somebody has to do it, uh, then again, a back support or a cushion in the driving seat is helpful. Automatic cars certainly are better than manual cars, where you do not have to uh, stoop forward, and so वो जरूरी है। Back strengthening exercises Yes. must be done to protect your back from the consequences of prolonged sitting. Wonderful, sir. Thank you so much. Next question is from Tinku Datta, 28-year-old. Loss of lumbar lordosis and back pain due to it. तो ये शेप क्यों इम्पोर्टेंट होता है सर, एंड क्या होना चाहिए सही, और अगर किसी का शेप बदल गया, ऑल्टर हो चुका है, तो उसको हम सही कर पाते हैं क्या? Yes. Again, the spine, this is a type of spinal deformity.
स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व होता है वो गर्दन में सी शेप का होता है, मिडिल बैक में रिवर्स सी या डी शेप का यू कैन से, एंड इन लोअर बैक अगेन सी शेप. दैट्स हाउ योर स्पाइन इज बैलेंस्ड, राइट? सांप की तरह। बट जी, इफ somebody has loss of lordosis means उसका जो सी शेप का कर्व है वो सी ना होकर स्ट्रेट लाइन हो गया है या टुवर्ड स्ट्रेट लाइन हो गया है. दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज सिवियर मसल स्पैज़म. मसल टाइट अगर हो जाती हैं तो वो सी शेप के जो कर्व को ऑल्टर कर देती है. तो इट्स नॉट अ डिसीज, इट इज ओनली टेम्पररी थिंग. बट इन सम पीपल हु हैव स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है, दैट मे बी कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल, तो वो खासकर लड़कियों को होती है यंग एज में, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मोस्ट पीपल हु हैव loss of lordosis due to muscle spasm which comes from something irritating the nerve in the neck or lower back, right? And जी, most of the time, the culprit is a protruding disc which touches the nerve and causes pain. right. So, can the exercise of the muscles help to regain the shape? Yes, yes, it's a reversible thing. If you take proper treatment in the form of physiotherapy, exercises, sometimes muscle relaxant, it will come to normal. It's only temporary. Yes. So keep your muscular health also in mind when you are talking about your skeletal health, is that underlined advice that Dr. Raju has given us. Next question is from Sanjay Varsheni. I have lower back pain on the left side. Sometimes it is increased, and what could be the reason? How to detect the reason of it? I'm 50-year-old, no BP or diabetes, or no. So, what are the tests? How do we say that somebody's spine is healthy, and what are the tests that one has to take? See, one is a simple, blood test which must be done after, as he's 50. I will say every year, go for preventive health check, and in that you will be able to find out if you have any problem related to complete blood count, inflammatory markers like ESR, vitamin D test, calcium, and so on. So it'll rule out if there is any general medical problem that is causing your back pain. But most of the time, the back pain is related to spondylosis or related to disc, uh, and that can be initially assessed with plain X-rays. And if there is any sign of nerve irritation, then an MRI is the gold standard test, which can tell you the details of your spine and should be done on the advice of a specialist. Correct, correct. So all these on the advice of the specialist, except for the general health checkups. So please do consult Mr. Sanjay ji. All your experts are on Apollo 24/7, and all these tests can be booked on Apollo 24/7 as well. So next question is from Mr. Shubham Gupta, who's 30-year-old, lower back pain, went for an MRI and got the result as slip disc issue in L4 and L5. Any suggestions? तो ये डिस्क का स्लिप होना काफी बार सुनते हैं सर, क्या स्लिप डिस्क होता है? देखिए, disc is um, a shock absorber between the two vertebrae or spine, right? So that gives us the flexibility of the spine that absorbs the pressure. आप ऊपर से कूद रहे हैं, बचपन में तो सभी कूदते हैं, तो आपको फ्रैक्चर नहीं होता स्पाइन का, बिकॉज योर डिस्क टेक ओवर the shock of falling or jumping. पर वो एज वी ग्रो ओल्डर, तो डिस्क के अंदर एक जेल होता है अंदर, और बाहर उसकी कवरिंग होती है. तो जेल गिव्स यू कुशनिंग इफेक्ट. इन एज वी ग्रो ओल्डर, दैट वो जेल सूखता जाता है. अगर वो जेल अपनी बाउंड्री को या अपनी कवरिंग को ब्रेक कर कर बाहर आ जाता है, तो उसको डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं. प्रोलैप्स डिस्क या स्लिप डिस्क. और उसकी कई ग्रेड्स होती है. अगर सिर्फ थोड़ा सा ही बाहर निकला है तो उसको प्रोट्रूडेड डिस्क बोलते हैं. अगर वो डिस्क पूरा बाहर निकलकर स्पाइनल कैनाल में आ गया है तो उसको एक्सट्रूडेड डिस्क बोलते हैं.
एक और वैरायटी होती है, उसको सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बोलते हैं, वो और सीवियर फॉर्म है। और अगर वो नर्व को दबाता है, नर्व वहीं से जाती है पास में, तो उसको न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन होता है, जिसके कारण से सिवियर लेग पेन, या किसी को गर्दन में है तो आर्म पेन विद बर्निंग, विद वीकनेस, कुछ भी हो सकता राइट, सो इनके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है सर? है। वो डिपेंड करता है किस ग्रेड में वो डिस्क स्लिप है और कितने लेवल पर है। 80% of the disc prolapse can be treated without operation. नंबर वन। तो सब जिसको डिस्क प्रोलैप्स है वो सबको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी, conservative treatment in the form of short course of anti-inflammatory and muscle relaxant, etc., can resolve the problem. But it may recur, of course, in future. But only those people जिनको कि कुछ ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो मैं आपको अगर बताऊं रेड फ्लैग साइंस कि कब आपको अलार्म होना चाहिए कि आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा तो नहीं है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इमीडिएटली, वो है अगर किसी को परसिस्टेंट पेन हो रहा है जो कि बैक से लेग में आ रहा है या गर्दन से हाथ में आ रहा है, नंबर वन। किसी को बर्निंग सेंसेशन है पैरों में, हाथों में, या वीकनेस है, आपको चलने में पूरा जोर नहीं ले पा रहे या कमजोर हो गया, तो इट्स अ साइन ऑफ अर्ली पैरालिसिस। या आपको आप बैक पेन या लेग पेन, आपकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि यूजुअली ये प्रॉब्लम विद फिजिकल एक्सरसाइज या मोशन से होती हैं। अगर आपको रेस्ट में भी पेन हो रहा है, सोते में आपकी नाइट, तो दैट इज एन अलार्मिंग थिंग, बिकॉज देयर कुड बी समथिंग एल्स, लाइक देयर कुड बी इन्फेक्शन इन द स्पाइन, देयर कुड बी ट्यूमर इन द स्पाइन। इसलिए नाइट पेन इज वेरी अलार्मिंग एंड वन शुड कंसल्ट द डॉक्टर immediately if there is such thing happening. Wonderful. So that these are the red flag signs, my dear friends. Please note them and then keep your eye on the symptoms and the progression so that you can visit nearest orthopedic soon. So next two questions are something similar. These are about the extension of the pain to the arms and the limbs. जैसे आपने अभी बताया. Stay motivated. इनका age है 32. Back pain in the back. It radiates to the left arm and the left leg as well. So 32-year-old. Aditya Chopra also is around 33-year-old. Pain is transferring from sitting bone to the lower back like a cycle. It goes up and down. As you said, these are radiating pain, which suggests that there is some compression happening in the spine, और उसके कारण से जो पैर में या हाथ में जो नर्व्स आ रही हैं वहाँ से निकल कर गर्दन से और लोअर बैक से, they are getting pressed or impinged, and hence an MRI should be done in such cases, and appropriate treatment will be planned according to the severity of symptom, according to the severity of the disc prolapse that may be present. Right. So पहले But आप पूरे टेस्ट आपने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स लिए ये पेशेंट्स के, आई एम एक्चुअली अफ्रेड टू सी दैट मोस्ट ऑफ देम आर इन अर्ली 30s, young. Yes, young doctor. people. Yes. Right observation. So yeah, I'm also seeing a few of the 70 plus. जैसे जयरामन जी, Because, sorry, जी है 70 plus के है, but most of them are young people who are asking questions. because Jhansi, if you realize the impact of this in long term, now most of us are living 70 to 80 years at least. Huh? And if somebody starts having back pain in 30s, they have to live 50 years with that problem. And that cannot be ignored. And as Right. you grow older, things are going to get worse. So prevention is better than cure later on.
Right, right. So, right exercise, keep yourself mobile, keep yourself aware. जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि बैक एक का सबसे पहला आप ट्रीटमेंट अवेयरनेस के साथ शुरू करोगे. I love that, doctor. So next question that is coming up is Shravan Raj. In 2022, I was diagnosed with juvenile idiopathic arthritis at the age of 25, which started with one knee swelling and now middle back is severe along with multiple joints. Currently on Mabura 40. Any advice, doctor? Yes. This is something like rheumatoid arthritis, a juvenile form. इसके अंदर कई जोड़ों के अंदर सूजन आना, दर्द होना, आर्थराइटिस होना इज क्वाइट कॉमन। और इसमें बड़े जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, छोटे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक फिंगर जॉइंट्स, नी जॉइंट, बैक एंड सो। ये ऑटो इम्यून डिसीज है और इसका अगर सही वक्त पर अच्छे ढंग से इलाज किया जाए तो इसको शायद हम ठीक तो नहीं कर सकते, पर तब भी इसको सप्रेस कर कर रख सकते हैं, जिससे कि जोड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी दे सकते हैं। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और किसी अच्छे रिमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से रेगुलर चेकअप करना है, बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम which requires years of treatment. Absolutely, sir. So next question is Mr. सुरेंद्र नाथ. जैसे आपने बोला है अपर बैक अगर मिडिल बैक का इशू है तो थोड़ा उसको अलग से ध्यान देना पड़ेगा. सुरेंद्र नाथ जी has a backache since 8 months. I have right upper back pain only after sleeping on a flat bed. So please advise what is this? The upper back pain is usually related to the neck. जो नेक से नर्व्स आती हैं वो आर्म में आती हैं, तो इसलिए अपर बैक पेन शोल्डर के आसपास ये दर्द गर्दन की वजह से हो सकता है, गर्दन में इरिटेशन होने की वजह से। और एज यू राइटली सेड कि आपको सोने के टाइम पोस्चर से, तकिए से लगाने से तकलीफ होती है, तो ये कॉमन है। इसमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलें, शायद वो एक्सरे कराने की ज़रूरत होगी टू मेक डायग्नोसिस, फिर कुछ फिजियोथेरेपी, पॉस्चर करेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट से आपको आराम पड़ जाएगा। Something similar here, I see a question from Naresh Reddy. Naresh is 30-year-old, experienced backache in the middle, that too only to one side, left side, and I also hear a crackle knuckle sound when I move my left leg up and down. सर ये साउंड्स अगर सामने झुकते हैं कुछ साउंड आता है या जोड़ों को हिलाते साउंड्स आते हैं, ये क्या होते हैं सर? ये this means that you know your discs are not functioning well. Their role of shock absorber is not happening properly. It's like your machinery getting older, right? So the disc may be degenerated and that's why उसके कारण से गर्दन में भी आवाज आती है, कई बार बैक में भी आती है, एंड वंस यू मूव फ्यू टाइम्स इट विल बिकम बेटर। तो इस तरह की प्रॉब्लम यूजुअली इंडिकेट्स कि देयर इज डीजनरेशन हैपनिंग इन द स्पाइन एंड यू शुड हैव प्रॉपर एडवाइस एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। ये भी 30 अराउंड है सर. As we are talking about aging and process of aging spines, arthritis is once known as an aging problem, but this does not look like that. All these things happen when you are young, but some people take care so they age gracefully, but those who continue to ignore their problem, they are obsessed with their work, will end up having a lot of problems when they grow older. Correct, sir. So here's Mr. Mridul Sharma, who's a 59-year-old. Mr. or Miss, I'm sorry for confusing the gender. Mridul Sharma, 59-year-old, having severe back ache, both lumbar and cervical and thecal compression issues in S1 joint. S1 or S, I didn't understand that, but S1 joint. So it seems कि इनकी जो MRI रिपोर्ट उन्होंने बताई है, इसमें गर्दन में और लोअर बैक दोनों जगह इनको स्लिप डिस्क है और उससे
थीकल इंडेंटेशन का मतलब कि जो स्पाइनल कैनाल के अंदर जो नर्व जा रही हैं उसकी कवरिंग पर थोड़ा दबाव है। अगर ये हल्का फुल्का है तो फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से इनका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। परंतु अगर ये ज़्यादा होता है तो कई बार फिर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, स्पेशली जो मैंने बताया रेड फ्लैग साइंस अगर उनको उसमें से कुछ है तो। Yes, sir. But the fear of surgery is something that we want to talk here. So, a lot of people think that touching the spinal cord with a surgery is really very dangerous. कभी कुछ हो गया तो lifelong bed पे रहना पड़ेगा. I understand the fear comes from quite many, but what is the newest treatment? How advanced are we right now? यू आर एब्सोल्युटली राइट। स्पाइन सर्जरी का डर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एनी अदर सर्जरी, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि स्पाइन को टच किया और कोई नर्व डैमेज हो गई या कुछ हुआ तो पैरालिसिस होने के चांसेस, विच इज एक्चुअली ट्रू। बट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, विद ग्रोइंग एक्सपीरियंस, ये सब 1% से भी कम होने के चांसेस रहते हैं सर्जरी। Correct. अब सर्जरी स्पाइन की इतनी सेफ है और it is done with minimally invasion, with using microscopes, with using robots, with using X-rays during surgery, spinal cord monitoring, and there are so many other newer things which have come. तो स्पाइन सर्जरी जिसको एडवाइस की गई है और वो अगर अच्छी जगह कराता है तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर, आई वुड से, लेस देन 1%। But on the flip side of it, if you have severe compression and if you don't do surgery, तो आपको पैरालिसिस होने के चांसेस मोर देन 50%। So which one will you choose? Oh, It's better to go for surgery if it is really indicated. Don't ignore. क्योंकि एक बार correct. स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो उसको सर्जरी के बाद भी ठीक करना मुश्किल है। Choosing the तो wise सर्जरी choosing the surgery would be wise if it is a good center and an expert who's doing it for you. So choose it wisely. That's the advice there. So next question is KJ Prabhu, 67-year-old है, L3, L4, L5, S1 this bulging है, Ramtech D लेते हैं, physiotherapy भी करवा रहा है. So but the problem started very recently. Can he wait on medication? 67-year-old है. See, this is typical elderly spine where 4-5 लेवल पर उनको डिस्क डीजनरेशन हुआ है और उसके कारण से स्पाइन की जो मोबिलिटी है वो कम हो गई है, स्पाइन स्टिफ हो गई है। समटाइम देयर कुड आल्सो बी एसोसिएटेड कैनाल स्टेनोसिस, जो लंबर कैनाल होती है स्पाइन के नीचे, वो उसका डायमीटर कम हो जाता है तो उसमें से जो नर्व्स लेग में आती हैं दे गेट कंप्रेस्ड और टिपिकली दीज पीपल हैव क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन का मतलब कि थोड़ा दूर चलने के बाद उनको पैरों में दर्द होता है और फिर बैठने से आराम पड़ता है, अगर वो चलते हैं तो वो ज़्यादा होता जाता है। अगर इस तरह की सिम्टम्स हैं तो इस दिस इंडिकेट्स कि आपका जो स्पाइनल कैनाल है उसकी नैरोइंग हो रही है, उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। पर अगर इस तरह का कुछ नहीं हो रहा तो सिंपल एक्सरसाइजेज, योगा एंड occasional physiotherapy will help. Wonderful, sir. Thank you. So, next question is from a mother. From we now have to move on to the pregnant and the weight-bearing spine. I also have back pain, and I'm suffering from the back pain since 4 years. That's age is 28. After pregnancy, the pain is more. I'm a mother of a 4-month-old baby, and I also have a 2-year-old elder baby. तो ये पेन कम क्यों नहीं होता है, इनको ये पता। प्रेगनेंसी में लेडीज का वेट बढ़ जाता है नेचुरली, प्लस देयर पोस्चर ऑफ द स्पाइन इज आल्सो ऑल्टर्ड, दे हैव हाइपर लॉर्डोसिस, पेट आगे होने की वजह से
Secondly, most of the females, especially in India, also have coexisting vitamin D deficiency in Correct. pregnancy. तो उसके कारण से भी स्पाइन वीक होती है एंड लैक ऑफ एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो इसलिए आजकल एंटीनेटल क्लासेस काफ़ी यूज़फुल हैं टू एडवाइज यू ऑन दैट टू हेल्प मेंटेनिंग योर मसल स्ट्रेंथ एंड सो ऑन. एंड प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद भी अगर पेन है तो वन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है या कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है. एंड वेट रिडक्शन exercises and other things which we have discussed are quite useful. All right, sir. So while we're talking about vitamin D and calcium के बारे में बात करेंगे, नवीन is 32-year-old male. Vitamin D deficiency है इनको और lower back pain 6-7 साल से है. Not able to sit continuously for 2 hours. Vitamin D deficiency is directly related to lower back pain. एंड जैसे हम आपने पहले भी बताया कि इंडियंस में थोड़ा डेफिशिएंसी होने का डर है, दैट वी हैव अ टेंडेंसी. हाउ डू वी एड्रेस द कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स? See, the vitamin D usually comes from your food, what you are eating. तो कुछ चीजें हैं जिसके अंदर विटामिन डी ज्यादा होता है एंड दैट मस्ट बी कंज्यूम्ड, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर है, दही, दूध. देन ड्राई फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, these are very rich source. Then fruits, fresh fruits are rich sources. Then those who are non-vegetarian can get lot of vitamin from egg and salmon fish. Um, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको ज़्यादा लेनी चाहिए विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी करेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए भी. दूसरी चीज़ है कि जब हम विटामिन डी लेते हैं बॉडी में, सो दैट इज नॉट इन एक्टिव फॉर्म. दैट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड with the help of ultraviolet rays that come from sun. So exposure to sun is also important every day for about 45 minutes if you want to activate your vitamin D that may be present in the body through your food or any other source. जिनको ये सब करने के बाद भी विटामिन डी की कमी रहती है, जो कि आजकल इजीली एक सिंपल ब्लड टेस्ट से अपन मेजर कर सकते हैं. एंड आई वुड एडवाइज दैट everyone should have at least once a year vitamin D test checking. And all ladies above the age of 40 and all men above the age of 45 should have DEXA scan to measure the bone density every year. Right. नहीं तो हमको पता नहीं चलता कि वी मे बी हैविंग वीक बोन्स, और जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. और वो फर्स्ट टाइम मेनी पेशेंट्स नो अबाउट इट कि जब उनको एक कोई मेजर फ्रैक्चर हो जाता है. इट्स अ साइलेंट डिसीज. It's a silent disease. So we are facing a silent epidemic of osteoporosis as we are growing older. तो इसलिए जरूरी है. Can that be prevented, doctor? If you have found it out early onset, then Yes. is there something that we can do to prevent osteoporosis progression? Yes, of course. ऑस्टियोपोरोसिस का जो सबसे अच्छा प्रिवेंशन मेथड है वो है एक्सरसाइजेज एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज, स्पेशली एंड वॉकिंग. तो वॉकिंग फॉर 45 minutes to 1 hour 5 days a week is recommended. That will strengthen your bone. vis-a-vis अगर सपोज कोई बीमार है या किसी को कोई ऐसी मेजर बीमारी जिसके कारण वो चल नहीं सकते या बेड में है, तो उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर अनेबल टू लोड देयर बोन्स. So walking is very important. Then good nutritious food, as I said, rich in calcium and vitamin D. एंड आजकल बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम एंड विटामिन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ड्रग्स विच आर अवेलेबल, जो बिस्फॉस्फोनेट्स होते हैं, कुछ
पीटीएच हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आजकल अवेलेबल हैं। वो लेने से बोन डेंसिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और फ्रैक्चर होने से बचाया जा सकता है। Wonderful, sir. So, while we are also talking about supplementation, let's talk about painkillers and other local joint applications, local applications. Mr. Jaykumar is also a senior who's having issues with pain. So, magnesium oil spray gives only temporary relief. So, what happens when you apply something on the pain site? Painkillers का इस्तेमाल करना क्या हद तक आप advise करते हो? See, there are three types of painkillers, you can say, that can help. एक तो होता है लोकल एप्लीकेशन में जेल, जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी दवा भी होती है प्लस कुछ काउंटर इरिटेंट्स होते हैं, कैम्फर वगैरह, जिससे आपको इमीडिएट पेन रिलीफ की फीलिंग होती है। हालांकि वो डिसीज को ठीक नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट पेनिट्रेट एंड रीच टू द साइट ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा है ओरल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जैसे वोवरान, ब्रूफेन, समथिंग लाइक। वो इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, आपका पेन ठीक करते हैं। तीसरे हैं स्टेरॉइड्स, जो कि अगर किसी को काफ़ी सिवियर इन्फ्लेमेशन है तो वो उससे स्टेरॉइड से ही ठीक होते हैं। एंड लास्ट इज कुछ नर्व्स को सूदन करने के लिए दवाइयाँ आती हैं, जैसे प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन एंड सो ऑन, जो कि स्पेसिफिकली नर्व को अफेक्ट करती हैं और नर्व पेन को हेल्प करती हैं। Right, sir. पर So, long-term painkillers. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनी पेन किलर इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि उनके बहुत साइड इफेक्ट हैं। पेट में अल्सर हो जाना, किडनी डैमेज हो जाना, कई बार हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स भी उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए 2-5 दिन 10 दिन पेन किलर खाने से अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, पर सालों तक खाने से और उसकी आदत डालने से वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। बेटर टू ट्रीट द डिसीज, रूट कॉज ऑफ द डिसीज रादर देन जस्ट द पेन। Wonderful, sir. Tapan Jyoti Biswal ji ka question है, sir, neuropathy pain like needle pricking and burning sensation in the feet, is this associated with a spinal or a neurological problem, and what could be the treatment for it? या श्योरली ये यूजुअली स्पाइनल कंप्रेशन के कारण से होता है, तो उसको पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पर है, कितना है। एंड एज आई सेड 80% लोगों में बिना ऑपरेशन के उसको हम ठीक कर सकते हैं, या मिनिमली इन्वेजिव जैसे कि फेसेट ब्लॉक इंजेक्शन है, एपिड्यूरल इंजेक्शन है, इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन ओनली few percentage of cases a proper surgery is required, which again, as I said before, is now much safer than what it used to be, a few decades ago. Correct. So next question is about somebody who's recovered from a surgery, and Kamal Baidia had a spinal tumor surgery in Apollo Bengaluru, but there is still stiffness in legs and hips. I'm walking with a walker. What could be the timeline for his recovery? See, I don't know how bad was the neurological problem before the surgery, but usually this is slightly offline because it was a case of tumor that has been excised by major surgery of the spine. So it may take longer than the conventional disc का जो remove करने का operation होता है, for example, where the patients may get better in 3-4 weeks. This may take few months, but keep doing your exercises regularly and keep follow up for your tumor progress by repeated MRI or testing, whatever your doctor has advised, and I'm sure you will come out of it. Thank you so much for that hope and positivity, sir. So next question is Madhu. Can lifestyle changes such as diet, stress management affect back pain?
Also suggest what changes can be made to improve our symptoms. Yes, you've been suggesting all the changes, but then yes, let's talk about stress management, stress and then backache, all the pains that it can cause. Stress can cause pain in back pain, especially in many people. Stress may be related to physical stress, it could be mental stress also. Those who are depressed, those who are related to their job or family problem, usually can express themselves with back pain. So yes, and a lot of people, in especially in developed countries, uh, take this excuse of pain to get off from their work and so on. So this is a very very major problem in developed world, which is again coming to India also in corporate sectors. So Um, basically, so so something which cannot be seen or which cannot be, have a, it can if be you or, if please you say continue. I have a pain, I have to believe it, Huh. right? So So no symptom, no so injury, nothing, but it could be back pain. So I'm experiencing pain. correct. So in those cases, with recurrent or chronic back pain without any obvious cause seen on investigation, we need the help of psychotherapist or psychologist to counsel to identify what are the triggering factors that may be responsible rather than jumping on for any surgical intervention. All right. So next question is from Karan, 25-year-old. I'm feeling a sudden pain in my left lower back while I was practicing my weightlifting. How can I identify the injury? Sir, आपने पहले भी बताया कि जो हम लोग जिम में weight lift करते हैं, that can have an impact on spine. So how do you identify injuries? By simple test called MRI. That is the only test, and that is the best test that can tell where is the problem and how severe it is. Right, right. And this is quite common in the gym goers, as I understand. Very, very, very common. This prolapse is much more common in younger people than elderly people. So while we say that exercise and weight bearing exercises are important, we should be watching out for the weight lifting, the serious weight lifters. What is a good weight, persistent weight, for the muscle and the bone health? Well, there is no ideal, cutoff marks for this thing. That depends on your body, your endurance, and your ability to do that. Your physical composition of your body. But whatever you can easily do, you do that. And if you want to increase, go slightly more every time rather than uh, seeing your peers or targeting, something very abnormal in short span of time. Yes, yes. So yes, we have to understand that while exercise is important, over exercising or putting stress through a lot of weight can be injurious as well. But it was a wonderful session, Dr. Professor Raju. Now we would want you to give us some top tips to take care of our spinal health. Maintain your posture, keep your body weight under control, avoid bending forward and weightlifting if you have a problem of back pain. Avoid sitting for long hours in chair and car. Use a back support if you have to do that. And regular exercises and good nutrition are the key factors that will keep your spine health good. All the best. Thank you, sir. Thank you so much for your time on this Sunday morning. We appreciate. Namaskar. Thank you. Thank you. So that was Dr. Professor Raju Vaishya, who has given us wonderful tips to take care of our spinal health. And now it's your turn to answer three simple questions. Health quiz coming up your way. If you're watching this on Facebook or Instagram, please hop on to YouTube chat where you can type the answers. I'm going to ask you three questions.
सिंपल है, एक fill in the blank करना है, yes or no में आंसर देना है, तो it's going to be easy. Answer the questions on YouTube chat. Winner's name will be announced towards the end of the show, and winners will be selected at the sole discretion of Apollo 24/7 team. If I take your name to be the winner, you have to write back to us before Wednesday to marketing@apollo247.com and gift vouchers will be shared with you. चलिए आज के 3 questions आपके screen पे है. The first question is true or false? Sitting up too straight for long periods can cause a strain on your back. True or false? Question number 2, fill in the blank. Backbone is another name for S से शुरू होता है, E से end होता है, S blank I blank E. What is that? Backbone is another name for S and blank. Fill in the blank, please. Question number 3, myth or fact? You can have back pain without back damage or injury. Is that a myth or a fact? You can have back pain without a back damage or an injury. So these are the 3 questions that we have asked you. Please go on, type your answers in the YouTube chat. And now we are going to give you coupons that you can use in Apollo 24/7. आप Apollo 24/7 download कीजिए and you can use these coupons there. Consult top doctors direct from Apollo and get 150 rupees cash back on online doctor consultation. And the code that you got to use is AskDoc150. AskDoc150. That's the coupon code. And the next one that we have for you is FIRST3, FIRST3. Use this coupon code when you order medicines direct from Apollo. You get 25% off on online medicine orders and you get a 2-hour delivery as well. So this also comes with the first 3 medicine orders which are above 1000 rupees, and the conditions are also written on the slide. The next one that we are giving you is HH247. This is exclusively for our health hour viewers. You get 199 off on online consultation with Apollo doctors and 20% off on medicine orders as well. This is in you can use this along with the other coupons that we have shared today. And let me also remind you that you can access Apollo 24/7 on WhatsApp as well. This is the number that you have to save, 9355247247. Save this number. You are just a call away or a text away on WhatsApp to avail healthcare services. चलिए नेक्स्ट वीक का टॉपिक हम बता देते हैं आपको. Women's Day is on 8th March and on 10th March we are going to talk about Women's Health Guide from everyday wellness to diet to disease prevention and more. So let all the women of your household participate in this, and if you want your women of your life to be healthy, do participate and see how you can benefit from the information we are going to share. And today's winners, congratulations, Neelam Chaudhary, Yogi Tech and Rupa Sahu. I repeat, Neelam Chaudhary, Yogi Tech, Rupa Sahu. Your names have been left in the chat box as well. You've got to write back to us at marketing@apollo247.com with the phone number, details, all the contact details, etc. and gift vouchers will be shared with you. Thank you all for joining us. Your questions were very valid and very, very important, because each time there is a question, there is an answer for many more who have not placed the question. So keep joining us every Sunday morning where we bring up experts from Apollo hospitals and we keep giving you answers for the unanswered questions. तो आज का टॉपिक कमर दर्द कैसे दूर करें हो गया. तो सही बैठिएगा, अवेयरनेस के साथ बैठिएगा, कीप एक्सरसाइजिंग, बी गुड विथ योर स्पाइन. थैंक यू ऑल. नमस्कार.